ओके जी, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने यूनिटी और रिक्वायर्ड टूल्स कैसे इंस्टॉल करने हैं और हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। ये एक एम्प्टी बिल्कुल नॉर्मल विंडोज 10 इंस्टॉलेशन है। आई विल गो टू माय ब्राउज़र, कोई ब्राउज़र आप यूज़ कर लीजिए और यू हैव टू गो टू यूनिटी वेबसाइट। unity.com इज़ अ वेबसाइट। आमतौर पे इसका लेआउट चेंज होता रहता है, बट आपने बेसिकली फ्री यूनिटी डाउनलोड करनी है। सो प्रोडक्ट्स में you could click on get started, look for an individual free personal version and you say that I'm a returning user, हालांकि आपने शायद पहले कभी डाउनलोड ना की हो। Unity Hub is basically the tool that you need to download. I confirm. बेसिकली एज एन इंडिविजुअल आप फ्री में यूनिटी हासिल कर सकते हैं अगर आप ये क्लेम करें कि आपका गेम्स से या यूनिटी से कमाया जाने वाला रेवेन्यू $100,000 एनुअली से कम है। सो यू अग्री विद दिस एंड डाउनलोड यूनिटी हब। सो द यूनिटी हब इज बेसिकली एन इंस्टॉलर। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग you will download. It will take a few moments to download. It's a small installation file. Once the download is complete, just run the installer or Unity Hub installer. It's a usual installation process जैसे आप आमतौर पे अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। मैं इसकी डिफॉल्ट लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करूँगा। एक्चुअली यूनिटी हब इज़ अ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो मुख्तलिफ वर्जन ऑफ यूनिटी डाउनलोड करने में भी आपकी मदद देता है। सो यू फिनिश इंस्टॉलेशन, रन यूनिटी हब। I can now close the browser. ये है यूनिटी हब। इसके अंदर दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो जनरल आप अपने नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लाइसेंस मैनेजमेंट में आप अपना नया यूज़र बना सकते हैं और एडवांस्ड में आप इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। सो इन द लाइसेंस dismiss this एंड लॉगिन आपको करना पड़ेगा। लॉगिन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यू कुड प्रोबेबली गो टू unity.com एंड मेक अ फ्री अकाउंट। अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दें एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट योर फ्री अकाउंट ओवर देयर। सो मैं यहाँ इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मेक श्योर यू क्लिक ऑन द बैक। Make sure you click on the back and then click on installs. You will see that there are no installs available here. First thing you need to do is click on add, and you need one of the latest versions of Unity. So they're recommending the release 2019.4.18 F1. Click next. उसके बाद खुद ही ये Microsoft Visual Studio Community Edition, which is a free edition available for you, उसको शामिल कर लेगा। I would recommend कि आप इसमें Android build support भी क्लिक कर लीजिए और iOS build support भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम iOS और Android दोनों के लिए अपनी गेम्स को बाद में पोर्ट करेंगे। Eventually हम WebGL build को भी select कर लेंगे। Click next. Accept the terms and conditions, and basically after accepting a few terms and conditions it will start the setup process for you. Generally ये इस process को आपसे transparent रखेगा। ये नई version Unity की नज़र आना शुरू हो गई है और अब इसने installation का process शुरू कर दिया है। ये छोटी सी blue taskbar है which will take a lot of time because it is a few GBs worth of download. ये आपका यूनिटी सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड करेगा, ये साथ में आपकी एंड्रॉयड एंड iOS एंड WebGL सपोर्ट भी डाउनलोड करेगा और उसके बाद फिर वी विल बी रेडी टू रन यूनिटी। सो लेट्स वेट फॉर द डाउनलोड कंप्लीट।
All right, as you can see that the taskbar, the blue bar on the top has changed and it is running fast. This means that the download is complete and it is installing the software. Please note it includes your Unity editor, Visual Studio, Android SDK, iOS SDK, a web SDK which will allow you to make games for your web pages and all. वैसे तो हमने इस वीडियो को तेज़ चला के आपको दिखाया है. याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना होगा, बिकॉज इवन ऑन द फास्टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स एंड ऑन द क्विकेस्ट इंटरनेट कनेक्शंस इसमें टाइम लगता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है. डाउनलोड के साइज़ भी काफ़ी बड़े हैं क्योंकि एक साथ ही हमने सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए हैं और फिर इंस्टॉलेशन और सेटअप करने में भी इसको टाइम लगता है क्योंकि एक नहीं 3-4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है और इंस्टॉलेशन के दौरान फिर दोबारा कुछ चीज़ें भी डाउनलोड होती हैं. सो आप इस प्रोसेस को कैंसिल मत कीजिएगा. यूजुअली डिपेंडिंग आपकी कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, ये आधे घंटे से लेके 3 से 4 घंटे तक ले सकता है प्रोसेस इंस्टॉलेशन का. इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम गेम बनाएंगे तब भी आपका कंप्यूटर इतना स्लो रहेगा. यूनिटी बेहतर चलती है जब एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए, लेकिन इंस्टॉलेशन प्रोसेस में काफ़ी टाइम बाज़ दफ़ा लग सकता है. सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. इसी प्रोसेस के दौरान आप देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर भी चलेगा. अमूमन आपसे वो सवाल जवाब ज़्यादा नहीं करेगा, बट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर विल ऑल्सो do some additional downloading and installing of the software. So patience is the key. So this is the overall installer of Visual Studio. It has its own download process. It is more of a silent installer, but installation का process तो ये आपको दिखाएगा. So इसमें भी several minutes लगेंगे, आपको उसका भी इंतज़ार करना होगा. और अब विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर भी कंप्लीट होने वाला है. और अब विजुअल स्टूडियो का इंस्टॉलर कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलर ख़त्म हो गया है और इंस्टॉल्स के अंदर प्रोसेस ख़त्म हो चुका है. डेस्कटॉप पे यूनिटी का एक आइकन आ गया है जिसको डबल क्लिक करके आप यूनिटी रन कर सकते हैं. और इस इंस्टॉल्स में यू कैन सी कि छोटा सा आइकन एंड्रॉयड का, iOS का और HTML5 का भी नज़र आ रहा है. सो इस तरह से हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिटी को कैसे चलाना है और उसके यूजुअल ऑन स्क्रीन मेन्यूज़ और डिफरेंट ऑप्शंस किस तरह काम करते हैं.